Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to my channel Mathx World. Students, today we will learn about scalar matrix. So students, what is scalar matrix? A diagonal matrix M is called a scalar matrix if all of its entries in the diagonal are same. For example, not equal to 0. So students, what is a scalar matrix? Simply, a diagonal matrix is called a scalar matrix if all of its entries in the diagonal are same. For example, हमारे पास एक मैट्रिक्स है k 0 0 0 k 0 0 0 k. सिंपली एक हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कोई भी अगर मैट्रिक्स है, अगर उसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज सेम हो तो हम कहेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लें. जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स हो 3 0 0 0 3 0 0 0 3. अब इसकी डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं? ये जो प्रिंसिपल या डायगोनल या मेन डायगोनल है, इसकी जितनी भी एंट्रीज है, ये नंबर है 1 2 3. कह रहा है कि ये तीनों एंट्रीज सेम हो प्रिंसिपल डायगोनल की. ये देखिए, ये तीनों सेम है, 3 है. बेशक इसकी जगह 4 हो, तीनों में हो. अगर तीनों मेन डायगोनल की एंट्रीज जो है सेम हो तो हम कहेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है. Hopefully students you get the point. If you have any question you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.